Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start chapter number 5, which is about the liquids. Now, the learning objective of today's lecture is to enable our students to describe the kinetic molecular interpretation of the liquids, to understand the general properties of the liquids, and to differentiate them from the other state of the matter like gases and the solids, and to define and explain the dipole-dipole forces, describe it with the help of examples, factor affecting these forces, and the effects of these forces on the properties of the polar substances. So, our first article is about the introduction of the liquid state of matter. What is the liquid? Liquid is the state of matter which has definite volume but no definite shape. It assumes the shape of container without filling it completely. इसका मतलब ये है कि लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। किसी भी कंटेनर में हम लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ये उस कंटेनर की शेप एक्वायर करता है जिसमें इसको प्लेस किया जाए, एंड इट एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर विदाउट फिलिंग इट कंप्लीटली। यानी कि लिक्विड चाहे कम हो या ज्यादा हो, तो ये उसको कंप्लीटली फिल किए बगैर जो है वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा। यानी मिसाल के तौर पे 500 ml का एक बीकर है, तो उसमें 250 ml वाटर अगर डालते हैं तो वो हाफ बीकर की शेप एक्वायर कर लेगा। नो रीजन फॉर द डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इज दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट are stronger than gases, but they are weaker than those in the solid state. Gases की कोई definite volume नहीं होती, कोई definite shape नहीं होती, क्योंकि उनके दरमियान force of attraction सबसे weaker है। जबकि लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसकी रीजन ये है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस स्टेट से स्ट्रॉन्गर है, जबकि सॉलिड स्टेट में डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर होती है। स्टूडेंट्स, लिक्विड की एक टाइप है जिसे हम सुपर कूल लिक्विड या ग्लासेस कहते हैं। Now these are the substances which appear like solid but at high temperature they behave like liquid even before they melt। यानी ऐसे substances हैं जिनकी appearance solid जैसी है लेकिन high temperature पर उनकी properties जो हैं वो liquid जैसी होती हैं, और ये liquid जैसी properties वो अपने melting point से पहले ही show कर देते हैं। So glasses, they are the super cooled liquids. Now, if we compare the intermolecular forces in the liquids, solids, and the gases, the force of attraction in the gases are so weaker that they are widely separated from one another. Force of attraction in the liquid, they are stronger than those in the gaseous state, जिसकी वजह से लिक्विड में मॉलिक्यूल या पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजर होंगे, whereas the force of attraction in the solid state are so stronger that they are held very closely to each other. So due to this very stronger force of attraction, the solids have the definite volume and the definite shape, whereas due to the comparatively weaker force of attraction in the liquids, they have definite volume but they have no definite shape. They acquire the shape of container in which they are placed without completely filling it, whereas the gas is the state of matter which has no definite shape, no definite volume due to weaker force of attraction, and they completely fill the container in which they are placed. Now, our first article is about the kinetic interpretation of the liquids. In kinetic molecular theory, liquid को कैसे describe करती है, इसके कुछ main points हैं. These points are known as the postulate. The first postulate, our main point, is that liquid is made up of molecules which touch one another, and they have fairly close packing.
and they are not widely separated from one another like gases, and they are not as closely packed as the solids. Now, the second property is that molecules within liquids are in the constant state of motion. But this movement of the molecules in the liquid state is limited due to their close packing. ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट गैसेस की निस्बत स्लो होगी। उसकी वजह यह है कि ये मॉलिक्यूल जो हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है, वो फ्रीली वन पार्ट ऑफ द कंटेनर से अदर पार्ट ऑफ कंटेनर तक मूव नहीं कर सकते। Now, the third postulate is that attractive forces among the liquid molecules are stronger as compared to those in the gas state. However, these forces are not sufficient to hold the molecule in fixed position like in solids. Liquid molecule can slide each other. जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्लाइड करते हैं तो उस वक्त मॉलिक्यूल फ्लो करता है। मॉलिक्यूल के दरमियान वीक फोर्सेस की ही वजह से लिक्विड फ्लो करता है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्गर है कि पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो फिक्स शेप possess करते हैं। Now, the fourth postulate is that average kinetic energy of liquid molecules is directly proportional to the absolute temperature. ये kinetic energy जो होगी वो गैसेस से लेस होगी, क्योंकि गैसेस में molecules high velocity से मूव करते हैं। They possess high kinetic energy as compared to the liquids. जबकि सॉलिड में पार्टिकल जो हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर सकते। Therefore, they possess the minimum kinetic energy. So, by increasing the temperature, solid will be converted into the liquid state, and by further increasing the temperature, liquid will be converted into the gas state. In each state of matter, the kinetic energy will be directly proportional to absolute temperature. However, average kinetic energy of the liquid molecules is less as compared to the gaseous substances, but is greater as compared to the substances in the solid state. Fifth postulate is that at constant temperature, the average kinetic energy of molecules is equal to the kinetic energy of the vapor. Suppose this is the liquid and these are the evaporating molecules. They will have same average kinetic energy according to the kinetic molecular theory. Now, our second article is about the general properties of the liquids. The first property is the diffusion. Diffusion is the spontaneous intermixing of the molecules. This property is the characteristic of the gases which occur due to the movement of the molecule. Gases एक दूसरे के साथ फ्रीली मिक्स अप करती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। हमें जो है वो कोई किसी स्मेल का एहसास फौरन हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम अपने रूम में एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो फौरन उसकी फ्रेग्रेंस तमाम रूम में स्प्रेड करती है। दिस इज ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रेग्रेंस विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर। Now, the same property is also shown by the liquids. लेकिन लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन का रेट गैसेस की निस्बत स्लो होता है। इसकी वजह जो है वो ये है कि गैसेस के बरक्स लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक हैं, वो उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। जब हम एयर फ्रेशनर रूम में स्प्रे करते हैं तो एयर फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस में एंटर हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड में क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोजली पैक हैं, जिसमें दूसरे मॉलिक्यूल जो हैं वो इतना इजीली अकोमोडेट
नहीं होते, जिसकी वजह से लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है। एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जैसे मैं अभी बता चुका हूं। एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ द कोलिजन्स। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन इसलिए रैपिड होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फ्रीली कोलाइड करते हैं। यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की रिस्ट्रिक्टेड है, देयर विल बी लेस नंबर ऑफ collisions and there will be slow rate of diffusion। इसको हम एक एग्जांपल से वाजे करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, अगर हम इसमें थोड़ी सी इंक डालें तो विदाउट शेकिंग जो है वो ग्रेजुअली काफी देर के बाद ये ब्लू सॉल्यूशन बनेगा। दिस शो द स्लो रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड्स। Now second property is the compression. Compression is the decrease in the volume due to increase in the pressure। क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए अगर उन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उनको सिग्निफिकेंटली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी उनके वॉल्यूम में जो है वो खातर डिक्रीज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, when pressure on water is increased from 1 to 2 atmosphere, its volume is reduced to 0.0045%। यानी वॉल्यूम में डिक्रीज होगी वो ना होने के बराबर होगी अगर वाटर के ऊपर प्रेशर हम डबल कर देते हैं, 1 atm से 2 atm कर देते हैं। ये आप देखिएगा प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम तकरीबन जो है वो सेम है। However, when same pressure is applied on the gases, there will be sufficient and significant decrease in the volume of the gases, और even ये गैस liquid state में भी convert हो सकती है। Now third is the effect of increase in the temperature. Now liquids expand on heating, इनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और दे कंडक्ट ऑन कूलिंग, जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। उसकी वजह यह है कि जब हीट किया जाता है तो लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। मोर ओवर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी ऑब्जर्व इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन, देयर अकर्स डिक्रीज इन द विस्कोसिटी, लिक्विड की थिकनेस डिक्रीज होती है, देयर अकर डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन, देयर अकर्स इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर। ये तमाम प्रॉपर्टी पर इफेक्ट होगा इंक्रीज इन द टेम्परेचर का। इसकी एक एप्लीकेशन, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, लाइक mercury thermometer, alcohol thermometer। In the thermometer, mercury expands in the capillary tube when the temperature increases। थर्मोमीटर को जब हम जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो थर्मोमीटर के थ्रेड में मर्करी राइज करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये थ्रेड या जो कैपिलरी है इसका वॉल्यूम इस थर्मामीटर के मर्करी बल्ब से बहुत कम है, तो इसलिए जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्मॉल एक्सपेंशन जो है दैट शो द विजिबल मूवमेंट ऑफ द मर्करी थ्रेड इन दिस कैपिलरी। सो वर्किंग ऑफ द thermometer is due to the expansion of the liquids on heating। Now the fourth property is the movement of the molecules। इसको अभी हम kinetic molecular theory में पढ़ चुके हैं। The molecules of liquid move with a less speed as compared to the gas state। What is the reason? Reason is the stronger force of attraction between them। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस की निस्बत स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो होगी वो लेस वेलोसिटी से होगी। thus they show the lesser kinetic energy। लेकिन इनकी ये kinetic energy टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस।
Now, molecules in the liquid are fairly closer to each other as compared to the gases. Gases के अंदर particles widely separated होते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं. Whereas in the liquid, the particles are held closer to each other as compared to the gas state, and there is very little intermolecular spaces between them. So, due to less intermolecular spaces, there is less movement of the molecules. Molecules कम move करेंगे. They will have less number of collisions, एक दूसरे से कम दफा टकराएंगे, and they will have the less average kinetic energy. Sixth property is about the intermolecular forces. The intermolecular force of attraction between the particles of the substances, they affect the physical properties. The intermolecular forces which are present in the liquid state affect the boiling point of liquid, their vapor pressure, their surface tension, their viscosity and the heat of vaporization. इन तमाम का इफेक्ट जो है वो हम अपने अगले टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. Now, seventh property is the kinetic energy. According to kinetic molecular theory, the molecules in the liquids have the slow average kinetic energy. Low kinetic energy किसकी निस्बत? As compared to that in the gas state. किस वजह से? This is due to the strong intermolecular forces of attraction. It is due to the minimum movement of the molecules, and it is due to minimum collision between the molecules. इन three reasons की बेस पर molecules की movement कम होगी और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड. नाउ लेट्स कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, या यूं कह लीजिए कि हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज को अदर स्टेट ऑफ मैटर से कंपेयर करते हैं. सो लिक्विड्स दे हैव नो डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, gases no definite shape. In solids they have definite shape, liquids no definite shape, they take the shape of container. Gases no definite shape. Solid possess the definite volume क्योंकि force of attraction बहुत stronger होती है. Liquids they also possess the definite volume, molecules are closer to each other, whereas the gases have no definite volume. जिस कंटेनर के अंदर उनको प्लेस किया जाए वही वॉल्यूम गैसेस का होगा. लिक्विड्स solid possess highest density, particles are held very close to each other. Density of liquid is less than that of the solids, whereas gases possess lowest densities. Solid cannot flow, particles are held very strongly to each other. Liquids can flow, gases can also flow. There are maximum force of attraction between the particles in the solid state. In liquid, the force of attraction are less as compared to those in the solid state, but they are stronger as compared to the liquid state. Whereas the force of attraction between the particles in the gaseous state are negligible. Now the force of attraction, the particle in the solid state, particles in the solid state, they are tightly packed together, whereas the particles in the liquid state, they are loosely packed as compared to the solid, whereas the particles in the solid gas state, they are very loosely held, they are widely separated from one another. Solid cannot be compressed, यानी प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो इनका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता. सेम इज ट्रू फॉर द लिक्विड्स, दे आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल. जबकि गैसेस में क्योंकि पार्टिकल वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दे कैन बी कंप्रेस्ड. Particles cannot move in the solid state because they only vibrate in their with respect to their fixed position, whereas the particles in the liquid state
just slide over one another. The particles in the gaseous state, they can freely move with respect to each other. Listen once again. The kinetic energy of the particles in the solid is minimum, क्योंकि इनमें मूवमेंट कम होती है. Kinetic energy of the particles in the liquid state is greater as compared to the solid, whereas the kinetic energy of the particles in the gaseous state is maximum. ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ. Comparison of the properties of the three states of the matter. Now the type of intermolecular forces. There are five type of intermolecular forces. They are dipole-dipole forces, ion dipole forces, dipole-induced dipole forces, London dispersion forces, and hydrogen bonding. The first of all, dipole-dipole forces. What is a dipole? Dipole क्या चीज है? Dipole is a polar molecule like HCl. HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3. क्लोरीन की ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब जो है वो ये है कि क्लोरीन हैज द ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So there occurs unequal sharing of electron pair. यानी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. क्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है. So due to greater electron density on chlorine, it will acquire partial negative charge. और हाइड्रोजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. Now this molecule is known as the dipole, that because it has positive and negative poles. Now these dipoles attract each other electrostatically. That is, partial positively charged end of the one polar molecule will attract the partial negatively charged end of the other polar molecule, and such force of attraction are known as the dipole-dipole forces. ये force of attraction जो है, however, covalent bond से weaker है. These forces are not arranged linearly. They are distributed randomly between the molecules. So we define the dipole-dipole forces as the electrostatic force of attraction between the positive end of one polar molecule and negative end of the other molecule are known as the dipole-dipole forces. These forces of attraction exist between the molecules of methyl chloride. This is the partial positive कार्बन, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव क्लोरीन. इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं. Likewise, these force of attraction also occur here. These force of attraction also exist between the molecules of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide में जो है ये molecule force of attraction between partial positive hydrogen of one molecule and partial negative sulfur of other H2S molecule. Now, what are the factors which affect the dipole-dipole forces? There are two factors which affect the dipole-dipole forces. First is the polarity of molecule and second is the distance between the molecule. Molecule में जितनी ज्यादा polarity होगी, जितना ज्यादा electron-activity difference होगा, उतनी ही ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान डायपोल-डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी. फॉर एग्जांपल इन HCl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा, डायपोल-डायपोल फोर्सेस HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान सबसे स्ट्रॉन्गर होंगी. इन HBr देयर विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 0.7 का बनता है. सो वीकर डायपोल-डायपोल फोर्सेस. HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जस्ट 0.3 का है, तो इसमें सबसे वीकर डायपोल-डायपोल फोर्सेस होंगी. डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अगर जो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर होंगे तो उनके दरमियान डायपोल-डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी. अगर वो एक दूसरे से अवे होंगे तो डायपोल-डायपोल फोर्सेस जो हैं वो वीकर होंगी. तो इसलिए लिक्विड HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान डायपोल-डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी
as compared to gaseous hydrogen chloride. So two factors which affect the strength of the dipole-dipole forces. Now, what's the effect of dipole-dipole forces on the thermodynamic properties? Now, dipole-dipole forces increase the following thermodynamic properties of the molecule. It increases melting point, boiling point, heat of vaporization, heat of sublimation. ये thermodynamic properties polar substances की ज्यादा होंगी, यानी polar substances में इन thermodynamic properties की value ज्यादा होंगी as compared to the non-polar molecule. किसी molecule में dipole dipole forces जितनी stronger होंगी उतनी ही उस सब्सटेंस में इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी ग्रेटर होंगी। तो ये बच्चों हमारा आज का आर्टिकल था। आज हमने जो है जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं लिक्विड्स की। आज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन पढ़ी है अबाउट द लिक्विड, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड की प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्क्राइब करता है। देन वी स्टडीड दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें फर्स्ट टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी ये डायपोल डायपोल फोर्सेस की हमने स्टडी की है। नेक्स्ट टाइम विल स्टडी द अदर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Thank you, my dear students.